Hello, everyone. I think we can start the session now. Others can join meanwhile. Yeah. So, a very warm good evening to everyone. I am Ms. Khan Agarwal, currently pursuing my master's in psychology from Banaras Hindu University. I would like to extend a very warm welcome to all of you. Thank you for joining us today as we explore the realm of clinical psychology in India. In recent times, as we all know, the field of clinical psychology had witnessed significant developments with new notifications and updates from regulatory bodies like the UGC every now and then. These updates have led to a surge in queries and uncertainties among aspiring clinical psychology students. So, to address these concerns and shed light on the scope and opportunities in this field, we at PsyConnect have organized this session for all of you. To guide us through this discussion, we are privileged to have with us an esteemed guest whose expertise and insights will definitely help us navigate some of those queries and concerns and answer our doubts. So, please join me in extending a very warm welcome to Ms. Sakshi Maheshwari, a distinguished clinical psychologist with a remarkable journey in the field of mental health. Ms. Sakshi holds a bachelor's and master's degree from Banaras Hindu University and further pursued her MPhil in clinical psychology from Gwalior Mansik Arogyashala, currently contributing her expertise at Niyama Digital Pvt Limited. She brings a wealth of knowledge and experience in various therapeutic modalities, including CBT, DBT, ACT, and many more. Ma'am, we are truly honored to have you with us today. So, before we delve into our podcast discussion, would you like to share a few words with our audience? First of all, thank you so much, Muskan. It was more than a heartfelt introduction. And obviously, that I said before, I am really appreciative of the foundations and everything that you guys have been doing. Uh, since about the field of clinical psychology, very recently some changes have been made and proposed. So whatever I'll just in advance want to tell that whatever I'll be telling right now, it's not like those changes have been substantiated yet. They are still proposed changes, and like I have already completed my MPhil. So when I completed my MPhil, it was like all the regular things that were happening in the field. So the changes that I have witnessed or are going to be made, that is all right now on paper and theory. So anyone who wants to clarify whatever I'm saying, like if this changes is there or not, please let me know so that I can make a clarification. There's no confusion left. Okay, okay, if this is the change now, this how the field is going to progress or anything. So yeah, that is all it's. Okay. Yeah, so without any further delay, we can start with our session. I would like to Sure. inform you all that your mic and video are turned off for a smooth conduction of the session. So, meanwhile, you can type in your queries in the chat box or ask them towards the end of the podcast. So, ma'am, my first question to you today is a very basic one. I think most of the psychology students have come across this. How did you get into this field of clinical psychology or psychology in general? Like, was it something that you had always planned to do or discovered it along the way? No, class 11th, I understood that I won't be able to study science anymore. I needed some other discipline. And also, since I was a biology student, so I needed a field which sounded similar more to medicine. Okay, I also consider myself being a doctor. So that's how I came across in class 11. Okay, there's this field of psychology. Then I researched around it a bit. Ki, okay, where do these courses are offered? One thing I was very adamant, I'll take up psychology along with other science subjects only, because I have been into science and maybe I won't be able to do other art subjects. So I found that only BHU and one or two universities were offering BSc in psychology. So that's how I came in bachelor's. Up till bachelor's, I did not have an idea about clinical psychology specialty. It was almost, I think, at the end of our second year, our seniors told us, okay, like when we were discussing, ki, ma'am, aap kidhar ja rahe ho, ya what specialty you are going to take. So they told us, ki, oh, there is this field of clinical psychology, jahan pe you can work in mental hospital settings and deal with those patients, whoever were interested. So that's how I came across about this field. And then पता चला कि before doing MPhil आपको masters करना ही होगा. So masters again I did from BHU. After completing our masters,
So I did not actually know that getting into MPhil would be so tough. Because I thought कि masters there is like masters में 50 seats है, तो around MPhil में भी कुछ नहीं तो 25-30 seats तो होंगी, हो जाएगा admission. But बाद में पता चला कि नहीं, there are just like almost in all of the institutes it was like just 8-10 seats. Then, And the time we had applied, because COVID had struck and a lot of universities in 2020 did not take admissions. So at that time we were very confused, all of us who were studying with me, like should we go ahead with MPhil or like should we drop the plan and go ahead with PhD. Then we had our talk with our professors. They explained what would be the difference it will make. Like now if I take up MPhil, I would give an additional benefit of like practicing also, and PhD though will give me that advantage of being a professor. So that's why we thought, कि, okay, no, we'll go ahead with MPhil only. So in 2021 September, I got admission in Gwalior Mansik Arogyashala. After coming, I think, into MPhil, that was the most clearest state. कि, okay, now what I'm going to do further in my field? What am I going to do? Like what profession I'm going to take up further? So yeah, that is how I landed up being a clinical psychologist right now. oh, everyone's journey in psychology is so different, and it's always Yeah. exciting to learn about it. Like, how did they get to this field? Because not a very conventional path to go ahead with right now. Yeah. Yeah, I mean, like it is still developing, I would say. Also, I would say one of the very big advantages right now is the series and movies they are portraying. Like they are bringing about issues of mental health. And Although there are some miss and match there, also the way they portray how a therapist is and everything. It's not exactly in real life, but yeah, I think that is a very major change and a major shift towards people understanding, okay, they need psychotherapist or clinical psychologist in the field. So yeah. yeah, at least the conversations are starting, Yeah, uh, yeah, yeah. Main point. and at a very big level, since movies and series, we all know, like, they are the representations of the youth today. Yeah, correct. So, ma'am, next question is, like, can you walk us through the recent discussions around the proposed changes in MPhil or MSci as it is called now, and how is it going to affect the current batch as well as the future aspirants of clinical psychology? Okay. So I think right now what the NEP has proposed is this year, I think in 2024, they're going to take in the last batch of MPhil, last batch as in with the designation of Yeah, MPhil. From next year, I think it's going to shift to MSci. So what I have understood till now is nothing is going to change majorly from MPhil to MSci, but the current batches who are in their bachelors or in their masters, they may have a little bit of I would say a challenge, because the shifting what is going to happen, see, the very professors who taught me MPhil, they are going to teach you guys MSci only. Now when I've looked at the syllabus, they have changed the syllabus pattern a bit. So they have brought in 3 degrees equivalently: postgraduate diploma, which is a 1 year course, MSci, which is same MPhil as 2 years course, and PsyD. What they have proposed is like when I did my MPhil. So in the first year, I had to learn psychodiagnostics, statistics, and psychosocial behavior. Means kind of social aspirant. In my second year, I had psychotherapy, my dissertation, and biology, neurobiology. Right now, they have made these slight changes. They have brought in psychotherapy in the first year. Now, what why they have done is what I have understood it, because that postgraduate diploma is just for 1 year, and they have to whoever wants to practice, they need to learn psychotherapy, right? So that's why I think they have shifted. They have brought psychotherapy in the first year, and they have shifted statistics to the second year. That whoever wants to, even if somebody joins MSci and they want to leave, at least they have basic knowledge of psychotherapy right now. So the I think the proposed syllabus changes is good, because statistics will be very much helpful if you're doing during your dissertation. Because when we studied in first year and we forgot in second year, and then there was a lot of hassle. So I think that will be good. Other than that, about talking to the entry, so right now they have kept कि अभी आपको MSci में admission लेना है तो you need to have masters in psychology. That stays intact, उसमें कोई change नहीं आया.
चेंज आया है बैचलर्स की डिग्री से. सो अभी तो जो बैचेस एंटर करके लाइक पीपल हु आर इन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर बैचलर्स, दे अगेन गो डू मास्टर्स एंड दे अगेन गो डू एमसाई, आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 3 years. उसके बाद से दे आर ब्रॉट इन अ प्रपोज्ड 4 year बैचलर्स प्रोग्राम. Means what they are trying to do is, uh, ऐसा होता था like people used to do bachelors in some other subjects, किसी भी सब्जेक्ट में, देन दे यूज्ड टू कम इनटू मास्टर्स डूइंग साइकोलॉजी एंड देन दे यूज्ड टू गो टू एमफिल. तो ऐसा होता है कि बहुत सारे थियोरीज, बहुत सारे जो हमारे जो बेसिक बेसिक आई से जो जनरल साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स होते हैं वो मास्टर्स में नहीं आते हैं. A lot of things which is required when you are studying clinical psychology, because जब आप clinical psychology पढ़ रहे होते हो तब वो आपको theories पढ़ाते नहीं है, तब वो आपको बताते नहीं है. But when you write reports or when you do therapy, you make that association, okay इस theory से ये therapy device होकर आई है, so इसलिए उसका knowledge important होता है. So right now what they are trying to do is कि अभी वो शुरू से ही from the first year you have to choose कि अभी आपको clinical psychology में जाना है कि नहीं. Advantages, it will be good कि आप शुरू से क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ ओरिएंटेड रहोगे. डिसएडवांटेजेस, पीपल डू नॉट नो फ्रॉम सच अ यंग स्टार्ट कि उनको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना ही बनना है. एमफिल में आके a lot of people leave because उनको समझ आता है that this field is not meant for them, because it's tiring, it's emotionally, sometimes it's frustrating, it is rewarding also. It's very good to hear जब patients आपको बोलते हैं कि thanks to you there was a significant difference in my life. But it's, everything comes with its pros and cons. तो बहुत जल्दी आई थिंक ये डिसीजन लेना थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो जाए कि क्या मैं ये फील्ड चुनना चाहती हूँ, whether I want to work ahead in this field. So I think maybe that could add a little bit of disadvantage. But even if somebody who is going to in a 4 year bachelor ka degree, specifically clinical psychology, and if they make this realization ki no, I do not want to pursue ahead, they can still make a shift into other fields of psychology. बिकॉज द वेरी बेसिक जो हमें पढ़ाया जाता है दैट स्टेज द सेम, चाहे तुम ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, स्पोर्ट्स में जाओ, हेल्थ में जाओ, किसी में भी जाओ, द बैचलर का थियोरीज या बैचलर का सिलेबस रिमेन्स द सेम, सो यू कैन मेक अ शिफ्ट. I think that would be an advantage. Also, second entry they are giving is 3 years bachelor's and 1 year masters, and उसके बाद आप एमसाई में एंट्री ले सकते हो. So this is also one of the proposed changes. There are three ways. One is 4 years bachelor's and then you directly go into MSci. Second is you do 3 years ka bachelor's, 1 year ka master's, and then you go into MSci. So that is what I think they have proposed right now. It will take time to get implemented because very factually India takes time. RCI को ये चीज 2014 या 15 से बोली जा रही थी, क्योंकि ये एमफिल को हटाने का बाद उसी टाइम प्रपोज हो गया था. बट RCI took a lot of time, whatever happened I don't know, but it took a lot of time to get this right now. Just to add in it in theory, it will going to take again 3-4 years to get it implemented. But there is one university, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर, उन्होंने इसी साल अपना 4 years बैचलर प्रोग्राम शुरू कर दिया है. So if somebody जिनको ये लगता है कि नो, दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर पाथ ऑफ गोइंग इनटू क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड नो मैटर व्हाट दे आर नॉट गोइंग टू शिफ्ट एंड चेंज, आई थिंक दे कैन बेटर गो एंड अप्लाई इनटू दैट 4 year बैचलर्स डिग्री, क्योंकि आपको शुरू से ही क्लिनिकल साइकोलॉजी का ओरिएंटेशन दे दिया जाएगा. दैट विल बी अ मोर, I think, more advantages what I feel. I think also about PsyD. So PsyD, I think there's one distinction I would like to make about what PhD and PsyD. So just right now when we have completed our MPhil, so most of us जो हम लोग में से professors बनना चाहते हैं, we are planning to go into PhD only. But साइडी की जो डिग्री इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिशनर स्कॉलर मॉडल, मतलब जहाँ पे वो आपको क्लिनिकल वर्क ज्यादा करवाएंगे एंड रिसर्च इज जस्ट इन योर 4th year. सो अगर मैं समझो कि कुछ किसी ने एमफिल किया है अभी एंड दे आर लाइक प्रैक्टिसिंग एंड दे डू नॉट वांट टू गो इनटू पीएचडी, लाइक इतना एक्सटेंसिव रिसर्च नहीं करना है, दे जस्ट वांट टू बी अ प्रैक्टिशनर मोर. सो दे आर गिविंग दिस एडवांटेज कि आप साइडी के 3rd year में ज्वाइन कर सकते हो. So first, second, like now what is the syllabus is, the first year syllabus is common to postgraduate diploma, MSci and PsyD. The second year syllabus is common to MSci and PsyD का second year. Third and fourth year PsyD का अपना program है.
सो थर्ड ईयर इज योर रोटेशनल इंटर्नशिप, जहाँ पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके इंटर्नशिप करनी है. फोर्थ ईयर इज योर dissertation. Dissertation is like 1 year research proposal that you have to do. So if there is anybody who does not want to go into extensive research, because PhD is research, I'll let everyone know in advance, it's extensive research, especially if you go into NIMHANS, CIP, or INPAS, who provide you PhD in clinical psychology. आपको पेशेंट्स के साथ तो काम तो करना ही पड़ेगा, वो 3 या 4 साल आपको अच्छे से रिसर्च राइटिंग एंड थीसिस सब कुछ देना होगा. साइड में इट गेट्स वेरी नैरोड, इट्स जस्ट वन डेजर्टेशन यू हैव टू डू. बट अगेन, अभी भी साइडी का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. इट्स जस्ट इन एमिटी एंड आई थिंक स्वीकार में है, जहाँ पे साइडी अभी से चल रहा था, बट आई डोंट नो वहाँ का साइडी कैसा है, आई हैव नो आइडिया. So if anybody is thinking about no, maybe they can take 1 or 2 years practicing, developing their skills, and then go up to do side. So I think that could be an advantage. Not अभी आप जाओ PhD में और आपका मन ना लगे and you feel कि I'm not able to do it. So आपको भी problem होगा, because research again, it's a tiring process in itself. Also क्योंकि उधर आपको आपका जो भी proposed research topic होगा, आपको patients उसी area के लेने पड़ेंगे. You cannot Yeah. do very much clinical work, which I know till now. So yeah, that is, I think, all these changes that are present right now. तो एक डर आ गया था कि क्या होगा, एमफिल का बैच बंद हो जाएगा, एमफिल नहीं चलेगा. नहीं, आई थिंक अभी नहीं होने वाला है. इस साल जो भी इंस्टीट्यूट एडमिशन ले रहे हैं, दे विल टेक इन एमफिल. मे बी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर दे विल यूज एमसाई ओनली. थोड़ा लेट हो सकता है इस बार के एडमिशंस में, बिकॉज दे आर ऑल्सो डिस्कसिंग व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुड वी नॉट. बट इट्स ओके, डोंट टेक टेंशन, द applications will come in. They do not want to go their batch zero, because आगे वाले सीनियर्स को बहुत मेहनत करना पड़ जाएगा. Right. Yeah. Yeah, Thank you so much for answering in such a comprehensive way. Like, since I also had most of these doubts, so they are very much cleared. And I guess others will also be. It will be helpful for them as well. And if still they have any doubts, they can type it in the chat box. Meanwhile, sure. yeah. And since we are talking about MPhil and transfers and all of that, let's address the elephant in the room, which is how do we go about preparing for these entrances? Since we don't have any like fixed syllabus for MPhil, and no, like different colleges have different paper patterns and marking schemes. So what are some of the most important topics which we can't ignore at all for these entrances? If you are doing already doing your masters, and I suppose in masters you do get to choose a special subject. Like अगर आप Yeah. whoever are doing from BHO, you have counseling and organization, counseling, sorry, clinical and organization का division. So clinical में आपको जो पढ़ाया जाता है about all the test, Rorschach, TAT, MMPI, everything. Clinical dominates all the MPhil के exams का pattern. मतलब if there are 100 question, like just assuming a general 100 question, so at least मान के चलो कि आपके 35 से 40 क्वेश्चन क्लिनिकल के आएंगे ही आएंगे. एंड इट विल इंक्लूड द साइको, मतलब द टेस्ट दैट यू आर स्टडिंग, द क्लिनिकल डिसऑर्डर्स, उनके सिम्टम्स, एवरीथिंग. वेरी ब्रीफली अबाउट थेरेपीज, लाइक सीबीटी जैसे बहुत कॉमन थेरेपी है, किसने दिया, उसमें क्या उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है. सो क्लिनिकल विल डोमिनेट द मोस्ट. Then comes biological psychology. Means biology is like biology, neuro you can integrate, जहाँ पे आपको that all that neurons and brain के structures, neurotransmitters, ये सब जो आपको पढ़ना होता है. Then biological psychology is very important. Statistics and research. स्टैटिस्टिक्स में बहुत एक्सटेंसिव स्टैटिस्टिक्स नहीं आती है, लाइक द हाई लेवल स्टैटिस्टिक्स ऑफ यूजिंग रिग्रेशन एंड लाइक आपको सॉल्व जनरली सॉल्व करने को नहीं आता है. इट्स मोर थ्योरेटिकल ओरिएंटेड, कि अगर आपको टेस्ट कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो क्या क्या करोगे, अगर आपको ये मतलब इस तरह का एक तरह से रिसर्च करना है तो कौन सा स्टैटिस्टिक आप यूज करोगे. तो स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च इज, मतलब बायोलॉजिकल एंड रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स आर ऑलमोस्ट इक्वल. लाइक उसके भी 10-15 क्वेश्चंस आते ही आते हैं. तो ये तो है कि ये ऑलमोस्ट सब जगह आता है. उसके बाद में सोशल साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज दे इंटीग्रेट सोशल साइकोलॉजी विद क्लिनिकल साइकोलॉजी. जैसे एक बहुत ही कॉमन हमारे में सोशल साइकोलॉजी में इफेक्ट होता है बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट. So एक बार there this question came कि okay, you
witnessed an accident on the road, you are a clinical, like you are somebody who is studying psychology, clinical psychology, and you know you should help that person, समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑप्शन में दिया हुआ था, आप क्या करोगे इस टाइम. सो दे इंटीग्रेट सोशल विद क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑल्सो. ऑल्सो सोशल साइकोलॉजी में क्रॉस कल्चरल स्टडीज के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब क्रॉस कल्चर की दूसरे कल्चर का क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे कल्चर पे, वो बहुत आता है. सॉरी. देन काउंसलिंग, काउंसलिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं 5-6, अबाउट द स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, या क्या काउंसलिंग स्किल्स चाहिए होगा एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को, अबाउट ऑल द सॉफ्ट स्किल्स दैट वी टॉक अबाउट, बीइंग एम्पैथेटिक, गुड लिसनर, पैराफ्रेजिंग एवरीथिंग. तो उसके आ जाते हैं लाइक 5-10 क्वेश्चंस उसके आ जाते हैं. देन what cognitive, very rare, like cognitive क्लिनिकल साइकोलॉजी में बहुत नीचे आता है. अगर आता भी है कॉग्निटिव में, तो कॉग्निटिव में वो जो आपकी इमेजिंग स्टडीज होती हैं उसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं. या फिर ना, वो कभी कभी केस स्टडी दे देते हैं कि इफ देयर इज दिस पर्सन जिसको मेमोरी, कुछ मेमोरी डेफिसिट्स हो रहे हैं, तो कौन सा एरिया ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग अफेक्ट हो रहा है. उस तरह से कॉग्निटिव के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. हाँ, मेजोरिटी तो लाइक दिस इज हाउ द ऑर्डर गोज. फिर थोड़े मोड़े इधर से कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आ ही जाते हैं. ऑलवेज भी क्वेश्चन विल, जो हमें लगता है कि ये तुमने कभी पढ़ा ही नहीं है, बट द क्लिनिकल विल डोमिनेट ऑलवेज. ऑल्सो लाइक व्हेन in Gwalior Manasik Arogya Shala, there were some things that we have never, like which we go in MPhil and study. They asked us that things also. Like he, I don't know why they did so, but yeah, like एमफिल में गए तब हमें उसका आंसर पता चला था कि ओ इसका आंसर ये होता है. सो देयर विल बी सम क्वेश्चंस जो थोड़े से तो ऊपर लेवल के होंगे, बट उसका चंक बहुत कम होता है. So, like any तो resources or books which you would suggest? मास्टर्स में आप जो जिन भी बुक्स रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो, दे आर गुड बुक्स. लाइक आई थिंक अब नॉर्मल साइकोलॉजी के लिए व्हाट डू यू गाइस स्टडी? आई यूज्ड टू स्टडी Archer फ्रॉम and Butcher. Butcher. Yeah, I study from Butcher. And statistics, AK Singh, they ask a lot of questions from AK Singh. Directly उठा देते हैं वो AK Singh से questions. So अभी तक, like I have used it up till MPhil also, AK Singh. It's not a very grand book, great book I would say, but I think it's that simplified language which what it provides. So they pick up questions directly from there. And then there are other also. Seeger is for non-parametric. Garrett, I think, is a difficult book to understand. What I have felt in my studying, ki it's a bit difficult to understand uska language. So if possible, statistics तो जितना यार, मतलब बहुत लगाने को नहीं आता है, बट अगर आपको बेस पता हो कि मेरे को अगर दो, just for giving an example, कि अगर there are two dichotomous variables which are nominal in nature, तो आप कौन सा statistics use करोगे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. तो अगर आपको ये थियोरी पता है, तो it gets easy for you to understand. Then टेस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है. टेस्ट वी यूज टू लाइक, हमें तो जय सर ने पढ़ाया था, तो ही एक्चुअली गिव अस वेरी नाइस नोट्स एंड एवरीथिंग. सो दैट वाज रियली गुड. सो हमने उनसे ही पढ़ लिया था. अदरवाइज यू कैन गूगल, या फिर ऐसा यूट्यूब पे चैनल्स आते हैं जहाँ लोग पढ़ा रहे होते हैं. सो टेस्ट ऐसा कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है. देयर इज दिस बुक कॉल्ड गैरी ग्रॉथ, बट अगेन वो हम एमफिल में आके पढ़ते हैं. जिसको इंटरेस्ट है वो पढ़ सकते हैं गैरी ग्रॉथ से. इट्स अ गुड बुक अबाउट साइकोडायग्नोस्टिक्स, वो दिया हुआ है. सोशल साइकोलॉजी आई स्टडी फ्रॉम सैंडरसन, विच मेरे लिए काफी था, whoever wants to study. I think general psychology, if you study 2-3 books, Cicerelli and Barron, and there's this one more book which is very used, Morgan and King. Morgan and King. Morgan and King. So I think so. Stud which book, ma'am? I'm facing. I think somebody. I'll write up the books. जिनको भी चाहिए. So I think if I use, you are taking up a general psychology का book, तो आपको एक पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, ये सब जो जनरल टॉपिक है जिनकी आप स्पेसिफिक बुक नहीं पढ़ सकते हो, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाता है. एंड दे पिक अप डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम सिसरेली एंड मॉर्गन एंड किंग. वो डायरेक्टली स्टेटमेंट्स उठा के पूछ देते हैं. Okay. तो आई थिंक देयर आर लाइक, आई विल राइट डाउन स्पेसिफिक बुक्स. कुछ बुक्स मैं खुद भी भूल गई हूँ.
So if Yeah, sure. anybody needs, Like they we can can they can share take it it. afterwards. One Yeah. book like which I found very helpful, which I would like to share if it might help, is Kaplan GRE book, that practice book. Yeah, yeah. That Right, right. I Correct. find that Very book much. really helpful Correct, क्योंकि correct. Yeah. उसमें सारे टॉपिक्स Absolutely. हैं and like in a very short form, but like most of the important topics are covered in that book. And their question standard is very good. Right. That Yes. standard of questions you'll find when you're giving NIMHANS for exam. NIMHANS questions are more, very much practical based. मतलब they won't ask you कि ये theory किसने दी या फिर what is classical conditioning. They'll integrate two concepts and then they'll ask. So I think yeah that JRE wala book has a set very good standards. Like they also ask you very case oriented and practical questions. Yeah, it's a Right. good book. So, like next question is for students who are considering to go into clinical psychology, like who have chosen this field, like from the very beginning, what advice do you have for them regarding choosing the right specializations and gaining any practical experience during their bachelor's and masters for Mhm. setting that base? Before entering into MSci or MPhil, whatever, when you start like go into training into a hospital, I'll highly recommend please do an internship anywhere in a mental health hospital. Please do an internship because when you enter into a training field, see, when you're doing a course which is more I wouldn't say it's a consumer based course. I mean, like it's not just a theory course. MPhil is a training course. So उधर आपको डांट पड़ती है, बहुत पड़ती है. Because there you are expected to work, learn, do things all at the same time. जब आप इंटर्नशिप करके आ रहे हो तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको इंटर्नशिप से सब आ जाता है, कुछ नहीं आता है, बट एक आपको एक आइडिया मिल जाता है हाउ थिंग्स आर गोइंग टू फंक्शन. जब आप देख के आते हो कि द पेशेंट्स यू आर गोइंग टू सी, आप कंफर्टेबल हो पाओगे, विल यू बी एबल टू होल्ड इन योर इमोशंस, विल यू बी एबल टू टॉक कंफर्टेबली. तो आपको एक आइडिया, तो आपको एक हेल्प मिल जाती है जब आप एग्जैक्टली ट्रेनिंग करने जाते हो. तो बिकॉज आप अचानक गए, आपने यू नेवर हैड एन एक्सपोजर, आपने कभी एक मेंटल हेल्थ सेटिंग देखी, वहां आप गए, वहां आप अपने इमोशन से भी लड़ रहे होते हो, आपको पेशेंट को भी देखना है, पेशेंट से ज्यादा आपको उनके केयर गिवर्स को समझाना होता है. दैट इज वन रियल टास्क, आई टेल यू. पेशेंट तो चलो ठीक है, वो मान जाता है. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes. ओके. Yeah. You're उनके right. केयर गिवर्स को समझाना इज अ रियल टीडियस टास्क. फिर वहां पे आपको, जो हमें प्यार से बैचलर्स और मास्टर्स में सीनियर्स ऐसे प्यार से बात कर देते थे, सब हो जाता था, वहां भी अच्छे हैं, ऐसा आई एम नॉट सेइंग, बट बिकॉज ऑल ऑफ देम आर गोइंग थ्रू देयर ओन इमोशनल टर्मोइल, सो यू वोंट ऑलवेज बी रिस्पॉन्डेड बैक इन अ वेरी पोलाइट मैनर. ऑल्सो यू आर एक्सपेक्टेड, लाइक you're almost 25, 26 when you're going doing that training, so it's expected of you to act mature. ऐसा नहीं हो पाता है, age has nothing to do with maturity, I feel. How much emotionally stable are you, that will decide. So whenever you go and when you're planning to go for an MPhil MSci degree, 1 month of internship anywhere, and go face to face. Don't do an online internship. Online internships are waste. Telling you honestly, they are waste of money, they are waste of everything. Never do an online internship, वो कुछ नहीं सिखा सकते हैं. So go into a mental health setting, see for yourself, and then go ahead and do. Second, can you just repeat the question once again, Muskan? What specifically were you Ma'am, like asking? choosing the right specialization and gaining that practical experience during their education. Okay, so right specialization you're asking in the clinical psychology field itself? Yes, like what papers should they choose in their bachelor's and masters so that they have a Okay. some idea about it. Bachelor's, so you have to study all of everything. You do not have a choice. Masters, may if you are planning to go into MPhil, choose the clinical papers specifically. Like I think BHU has psychodiagnostic, psychotherapy, counseling, psychology. Baki to first year, to they have biological, cognitive, and research and Yeah. everything. Uh, Again, like I said, when you go into MPhil, you are not given like.
हैंड टू हैंड क्लासेस, हैंड टू हैंड नोट्स, एवरी डे आपको ऐसे बैठा के पढ़ाया नहीं जाता है. कुछ इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है, जैसे निमांस, they give like really good supervision, or IOP has like 11 clinical psychologists, Institute of Psychiatry Kolkata. तो उधर आपको you get good supervision, but majority of the institutions present right now, they have 2 or 3 clinical psychologists, means 2 or 3 professors. सो उतना पॉसिबल नहीं होता है दैट वो आपको क्लास भी ले, वो आपको पढ़ाए भी, वो आपको सिखाए भी. तो दे एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट बेसिक थियरी नॉलेज तो आपको होगी ही होगी, कि एटलीस्ट कितने कौन कौन से डिसऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं, उनके क्या बहुत बेसिक सिम्टम्स होते हैं. चलो डिसऑर्डर तो एक बार को हो गया, कि आपको देखते देखते भी आदत हो जाएगा कि हाँ ये पेशेंट देख रहे हो, ये डिसऑर्डर है. द रियल डील विल कम इन व्हेन यू हैव टू एडमिनिस्टर साइको डायग्नोस्टिक्स. नाउ फॉर एग्जाम्पल, ये अभी आपने पढ़ लिया, जिन्होंने यहाँ से पढ़ के गए कि रोशाक क्या होता है, रोशाक का थियोरी बेस क्या है, उसमें क्या क्या आपको देखना होता है, लोकेशन डिटर्मिनेंट्स एक्सेट्रा जो भी होता है, इट विल बिकम वेरी स्मूथ एंड वेरी इजी फॉर यू टू एडमिनिस्टर रोशाक एट दैट टाइम. क्योंकि वो इतना मोटा एक बुक आता है जो आपको एक पढ़ना पढ़ना पलटना पड़ता है. सो इफ यू आर वेल एक्वेंटेड विद इट, इट विल बिकम इजी फॉर यू. सो साइको डायग्नोस्टिक्स का थियोरी प्लीज प्लीज पढ़ के जाना, whoever is going to MPhil, it will help you a lot. Psychotherapy you'll learn over there only. Therapy will come only when you start practicing. तुम जितना भी थियोरी पढ़ लो, तुम जितना भी उसका CBT के थॉट डिस्टॉर्शन, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पढ़ लो, until unless तुम लगाओगे नहीं उसको पेशेंट के साथ, you'll understand कि नहीं, जितना easy है पढ़ना थेरेपी को, बहुत मुश्किल है उसको अप्लाई करना. बट वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, कि तुम्हें समझ आ जाएगा हाउ आई एम गोइंग टू डू इट, इट विल बिकम इजी. सो थेरेपी डोंट वरी अबाउट इट. बेसिक पता है, खाली एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए चलेगा उसका. सो दैट यू हैव टू स्टडी a very brief knowledge about all the categories of disorders that are present in ICD or DSM. Because even I'm talking about from the point of entrance exam also, they ask like right now some of the new categories of disorders have been added: internet gaming disorder, caffeine disorder. Okay. Very proposed is they ask about the new changes that are happening, the new changes that went from DSM-4 to DSM-5, categories बढ़ी, separations हुए. तो ये अगर आपको एक बेसिक पता है ना, तो उधर जाके भी आपको आसान हो जाएगा. लाइक आई थिंक इंडिया यूजेस ICD राइट नाउ, ICD-10. जब तक मैं एमफिल में थी, राइट नाउ ICD-11 हैज कम इन. सो नाउ देयर आर द कैटेगरीज हैव डिफर्ड फ्रॉम ICD-10 टू ICD-11 आल्सो. तो कई बार जब आप रिपोर्ट लिख रहे होते हो, आपको कोड लिखना होता है और फिर वहां बहुत बेइज्जती होती है कि आपको कोड नहीं याद हो रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं कितने सारे डिसऑर्डर्स है. तो इसलिए अगर यहाँ से एक बार पढ़ के जाओगे, तो इट विल बी इजी फॉर यू to understand. So I think that brief preparation is enough for you if you want to go into that specialization. Uh, MPhil में there's the syllabus is constant. आप किसी भी institute से पढ़ोगे, because वो RCI ने propose किया है. सो कई बार होता है जब आप एमफिल से खत्म करके जॉब लेने जा रहे हो, तो या चलो जॉब में जब आप डिसर्टेशन भी करते हो, तो आपसे पूछा जाता है कि आप किस पॉपुलेशन के साथ काम करना चाहते हो, किस एरिया में स्पेशलाइज करना चाहते हो. तो कई बार जब हम एमफिल कर रहे होते हैं, तो इट विल डिपेंड लार्जली कि आपका हॉस्पिटल में किस तरह की पॉपुलेशन ज्यादा आ रही होती है. अब इफ नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद अडोलेसेंट एंड टीन्स वेरी मच, बट मेरे हॉस्पिटल में उतने अडोलेसेंट और टीन्स नहीं आते थे. So once you get into MPhil, tab you'll understand better ki where do you want to go ahead, where do you want to specialize it in. Because sometimes like हमारे यहाँ OCD के patients बहुत आते थे. They were like big number of OCD का patient and depression का patients. So उनका therapy करते करते it becomes more easier to now understand those cases, formulate those cases. So don't worry about कि अभी आपको उधर like where do you want to go ahead in your specialization. First go into MPhil, go into MSci, whatever, and there you'll get enough time to understand what is the area of interest you want to delve into. There's this one very important thing I want to say. When you go into MPhil, when you go into MSci, आपको ऐसा लगेगा द पेशेंट्स का जो कंसर्न है, जो इश्यूज है, वो आपकी खुद के लाइफ में समटाइम्स यू रेजोनेट अ लॉट.
because wo bhi, they are also humans, I am also human. Just because I'm sitting on the other side of the chair doesn't mean I'm completely like stable, I do not have any issues. And rather, a lot of clinical psychologists have more issues than the patients themselves. So if possible for any one of you, if you do not want to go into any traditional therapy setup also, at least try and introspect yourself. Try and understand what are the things that trigger you, what are the things that affect you, where are when your emotions flow out and you're not able to control them. Because the more introspection you do, for me, I think therapy became easier because I made myself my reference point. Okay, if I have a patient, like why I'm more interested with adolescent and teens is because I went through those stages. I have seen what happens with them, क्या उनका डिसबैलेंस होता है पेरेंट्स के साथ, क्या उनको rebellion होता है. So I'm able to connect with them a lot. So that's why therapy becomes very easy to do. Okay, I can understand, I can empathize. And since I also crossed their stage, I also come here, they'll also be able to do it. They just have to be given that reassurance. So हर किसी का अपना अपना एक इंटरेस्ट एरिया हो सकता है. I'm not saying किसी को जेरियाट्रिक पसंद है, किसी को बच्चे ही पसंद है. But introspect yourself a lot. That's it. Yeah. That was very insightful, to be very honest. It was like in a way, it was what would I say, roadmap to clinical psychology. Like if you want to go to MPhil, this is the base which you have to work upon, and it will be helpful. Yeah. So since MPhil, as it is regulated by RCI and mostly RCI, so how do you see the role of these regulatory bodies in ensuring the standardization and accreditation of MPhil programs? I don't know. I don't think I see any because RCI took such a long time to just change that nomenclature of MSci to MPhil. But yeah, but since they have given a common syllabus and everything, so I think that uh, that gets it easier कि चलो आप अगर 10 लोग 10 इंस्टीट्यूट से भी करके आ रहे हैं MPhil, so they stand on a common ground जब वो बाहर आते हैं. Now see, any regulatory body will give you a proposed syllabus or proposed path. Implement karna is in the hands of the professors who are there in that institute. Like I'm now, for example, like my professor, he had a very much interest working with OCD and Rorschach. So उन्होंने हम लोग को बहुत रोशाक करवाया, बहुत OCD के patients दिखाए. The my ma'am, she had more interest in working with kids with autism, ADHD. जिनको भी kids में interest था, she made them work a lot with them. So see, a lot of it will depend कि जो आपके प्रोफेसर्स हैं वो किस तरह से आपको ओरिएंट करते हैं. दे लाइक वी वर वेरी मच गिवन दिस थिंग जब हमें रिपोर्ट राइटिंग करना होता है कि नहीं ऐसे करो, ऐसे लिखो, जो कि एक एडवांटेज था. तो आई थिंक दैट वुड डिपेंड कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो. ऑल्सो योर इंट्रेंसिक मोटिवेशन विल मैटर अ लॉट. जैसे मैंने बोला कि एमफिल में जाके स्पून फीडिंग नहीं होती है. आपको अपना इंट्रेंसिक मोटिवेशन को बहुत बहुत जगा के रखना पड़ता है कि नहीं, हम यहाँ आए हैं, हमको पढ़ना है, हमको ये डिग्री चाहिए, आई हैव टू लर्न समथिंग. सो दैट इज अदरवाइज एक तो कॉमन सिलेबस तो हर जगह चल ही रहा है. तो that is not going to make much of a difference. What you take up from that, how much you learn, what type of therapy. Now, since see, Institute of Psychiatry Kolkata has 11 clinical psychologists. Now imagine those 11 clinical psychologists have diverse range of specialty. So one of my colleague Interesting. who has done from IOP, so he used to tell me he now knows a lot of therapies. Even अगर वो apply नहीं भी कर पाता, at least he has that knowledge base कि अच्छा इतनी सारी therapies हैं. Also the clinical psychologists over there were pretty strict. वो काफी चिल्ला चिल्ला के बोल बोल के उन लोग को काम करवाते थे. So now he has some very good amount of knowledge base. So I think it will be very important आप कितना अपने प्रोफेसर से ले पाओगे, निकलवा पाओगे कि वो आपको वो नॉलेज शेयर कर पा रहे हैं कि नहीं. सो
I think there is this one thing, whenever you're going to pursue MSci or MPhil, your institute will matter a little bit. कि अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूट में चले गए जहाँ पे प्रोफेसर ही नहीं है, बिकॉज ऐसा भी कई जगह है। अभी आरसीआई बहुत इजीली सबको लाइसेंस दे दे रहा है कि हाँ आप अपने एमफिल खोल सकते हो, बट प्रोफेसर्स नहीं है। क्योंकि देयर इज दिस वन थिंग आल्सो, एमफिल को पढ़ाने के लिए यू नीड टू हैव एन एमफिल। मतलब एमफिल को एमफिल के प्रोफेसर्स ही पढ़ा सकते हैं, जनरल साइकोलॉजी के प्रोफेसर्स नहीं पढ़ा सकते हैं। तो क्या होता है कि लोग एमफिल करके ज्यादातर लोग चले जाते हैं प्रैक्टिस करने, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू अर्न आल्सो एंड दे वांट टू लाइक एनहांस देयर स्किल। पढ़ाने बहुत कम लोग आते हैं, तो इसलिए देयर इज अ लाइक सीरियस शॉर्टेज। तो लोग एडवर्टाइज तो कर देते हैं, हाँ हम अपने एमफिल खोल रहे हैं, एमसाई खोल रहे हैं, एंड व्हेन यू गेट इनटू इट देन यू रियलाइज ओ देयर इज नथिंग टू लर्न फ्रॉम देयर। So rather than going and wasting your money, please look up into the institute wherever you're going to pursue MPhil from. That is going to be very important. I think this answers one of the other questions which I had, which was like the challenges faced by the students in clinical psychology in terms of the curriculum and the supervision. So, can you little bit explain more on these supervision? Like, how are the supervisors impacting a student in their life? Like, do they need to take a supervision for learning a particular modality or something else during their course of MPhil, or will it be covered in the training itself? No. In the training itself, you'll get to know कि okay, these are all the therapies that are present that I can use. Also, see, therapy is something that is ever learning, ever growing. The more you use on your patients, the more you are going to learn. Most of the professors right now are professors जिन्होंने BT, CBT यही सब यूज किए। मतलब साइको एनालिसिस के भी प्रोफेसर्स नहीं रह गए हैं। मोस्ट ऑफ देम आर लाइक बीटी एंड सीबीटी प्रैक्टिशनर्स ओनली, और बहुत ज्यादा है तो जेपीएमआर वगैरह करवा देते हैं। जो न्यू एज थेरेपीज आ रही है, मींस जो जिनको हम फोर्थ वेव या फिफ्थ वेव थेरेपीज कहते हैं, स्कीमा थेरेपी, एमबीसीटी, एंड देन देयर इज ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एंड एवरीथिंग। फ्रैंकली स्पीकिंग ये सब सिखाने के प्रोफेसर्स नहीं है हमारे यहाँ। तो अगर आपको ये सब सीखना है, यू हैव टू गो इनटू सम सेपरेट कोर्सेज के आपको लेना ही पड़ेगा। हाँ, यू हैव टू, अगर आप जस्ट वांट टू वर्क अराउंड विद बीटी, सीबीटी, डीबीटी, वो सिखाने वाले दोस्त प्रोफेसर्स आई नो बिकॉज दे हैव वर्कड अ लॉट, तो वो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे सकते हैं। अगर कभी आप खोलोगे एमसाई का सिलेबस और आप थेरेपी का सिलेबस देखोगे, अभी तक मैंने देखा तो दे हैव शॉर्टेंड इट अ लिटिल बिट। हमारे एमफिल में दे वाज लाइक जितना पॉसिबल थेरेपीज का नाम उनको याद आया उन्होंने सब कुछ सिलेबस में डाल दिया। सो वी वेंट अप टू आवर प्रोफेसर्स एंड आस्क्ड कि सर ये कहाँ से पढ़ना है। लाइक ये नहीं यूज होता है, इसको छोड़ो, तुम बीटी और सीबीटी पढ़ो। बिकॉज आई अंडरस्टैंड दे हैव नॉट यूज्ड इट, दे डोंट अंडरस्टैंड how schema therapy is different from CBT. Everything originates from a tree only. CBT and BT are the trees जिनसे सब branches निकल रही है, but still there are differences, like how attachment theory, attachment style, schema therapy uses attachment style, या MBCT uses specifically mindfulness only, या transpersonal therapy uses their specific modality. तो ये सब new age therapies आपको हो सकता है मुश्किल हो सकता है आपको ऐसी जगह जहाँ पे बहुत, जैसे मैंने बोला निमहांस, आईओपी, जहाँ पे बहुत डाइवर्स वैरायटी है साइकोलॉजिस्ट की, जहाँ पे बहुत ज्यादा फैकल्टी अवेलेबल है, वहां आपको सीखने को बिल्कुल मिल सकता है। एंड दे हैव लाइक सम गुड सुपरविजन। तो अब देखो, जहाँ पे 2 या 3 प्रोफेसर्स हैं एंड जनरली ऐसी जगहों पे 8 या 10 बच्चे होते हैं, तो सुपरविजन मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब वो आपको हर केस में आपके साथ नहीं बैठ सकते हैं, आपको हर बार नहीं दिखा सकते हैं कि आपको कैसे करना है। पर हाँ, आई वुड बी थैंकफुल फॉर दिस कि एटलीस्ट मेरे जो प्रोफेसर्स थे दे वर वेरी वेरी काइंड एंड वेरी नाइस। जो भी, अगर हम लोग को जब हमें केस मिलता था थेरेपी का या साइको डायग्नोस्टिक का, तो एट द एंड ऑफ द डे हम जाके उनसे डिस्कस कर लेते थे कि सर ये हुआ है, हमें ये आ रहा है, हम ये कर रहे हैं। तो एटलीस्ट उनको जितना आता था वो अपने एंड से तो हमें बता देते थे कि हाँ तुम ये कर लो, ये कर लो। वी हैड नो रिस्ट्रिक्शन, तुम्हें जो यूज करना है वो करो, तुम्हें जो आता है तुम वो करो, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न समथिंग गो।
go ahead. There was no foundation. So agar, like I am was interested in doing ACT more. I was more ACT oriented. So I used to do ACT more with my patients. So they did not know very much about ACT, but yeah, they always promoted, if you want to do it, go ahead and do it. So again, getting to the same point, Muskan, your professors will matter a lot. Also, your interpersonal relationships matter a lot than more than you think of, क्योंकि आपके सीनियर्स ही होते हैं जो आपको सिखा रहे होते हैं. अभी दो ही प्रोफेसर्स हैं, दे डू नॉट नो एवरीथिंग ऑल्सो, उनके पास भी एक बर्डन है, दे हैव टू डू अदर थिंग्स ऑल्सो. सो इट इज मोर ऑफ योर सीनियर्स जो आपको सिखा पाएंगे. सो वी हैड गुड सीनियर्स वहाँ, एटलीस्ट थैंकफुल, आई वाज थैंकफुल. सीनियर्स हु टॉट अस, बैठा बैठा के ऐसे टेस्ट करो, ये रिपोर्ट लिखो. We were given a chance to sit in the therapy sessions with them. जो मैंने सुना एक दो इंस्टीट्यूट में कि वहाँ स्ट्रिक्टली बैंड है कि नहीं, फर्स्ट ईयर नहीं बैठेगा थेरेपी में. तो जब आप थेरेपी सेशन में बैठते हो, तो तब आपको एक आइडिया लगने लगता है कि ओके, आपको थेरेपी करनी कैसे. अगेन सही ना, आपने बुक से एक चीज पढ़ी, अभी उसको जाके इम्प्लीमेंट कर दिया. बुक से प्रैक्टिकल में देयर इज अ ह्यूज गैप. मतलब कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को मैं सही कर रही हूँ, करना मुझे वही है, पर वो कैसे करना है ये मेरे को नहीं आ रहा है ना, वो बुक नहीं सिखा रही. तो जब आप थेरेपी सेशंस में बैठते हो, तो आपको आइडिया समझने आने लगता है कि ओ ऐसे करना है, वैसे करना है. सो हाँ, वन थिंग अबाउट यू, वेन द क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट, जाने से पहले एमफिल में क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए. If you ever get a chance with anybody who is great and supportive of letting you sit in the therapy session, there is nothing greater good, learning from it. नहीं होता है, बिकॉज इट इज अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी के इश्यूज की वजह से नहीं अलाउ करते हैं. बट स्टिल इफ समबडी इज रेडी कि हाँ ठीक है, हम आपको बैठा लेंगे ना, आई एम रेडी टू, आपको कुछ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं पता है, इट्स ओके, फाइन, दैट यू विल लर्न इवेंचुअली. बट टू गेट टू सी कि थेरेपी होती कैसे है, थेरेपी की कैसे जाती है, that's more than good. अगर if somebody is helping you, allowing you to do so, because professors के पास इतना समय नहीं होता कि वो हर एक बच्चे का हर एक सेशन को हर दिन देख सके. So you're more on your own in MPhil. Yes, like we all have heard about therapy, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हो सकता है, but yeah, the real picture we can only learn when we are going through it and in the Yeah, present. yeah. So, next thing, like about there are very much recent developments in the field of clinical psychology. So, what are the resources, networks, or like professional associations which you recommend for individuals pursuing clinical psychology to stay connected and updated with the field? I hope you, all of you, please make a profile on LinkedIn, because LinkedIn is very informative when it comes to like finding resource person, or even knowing what is going on into your field. Attend conferences if possible, especially there's this clinical ISCP का conferences and even other conferences. So उससे आपको पता चलता है कि बाकी जगह क्या researches हो रही हैं. So if you are interested in doing any other उस whatever, if जो particular area में research हो रही है, अगर if you are also interested, so you can talk with the supervisor या जिन्होंने भी research conduct कि हम भी ये करना चाहते हैं, तो it helps you build connections. uh, I think there is a lot and lot of information available right now on internet about कि ये करो वो करो. I would never suggest कि randomly किसी का भी सजेशन उठा के पढ़ लो कि थेरेपी ये है, ओसीडी ये है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पीपल जिनको ऐसा डेजिग्नेशन मिला हुआ है, who are working somewhere in some universities or at some places, or who are practicing, please try and follow them only, not anybody who is just like on Instagram going and giving speeches and advices. Conferences I feel work help you out a lot, whoever wants to like go ahead in academic fields, that is more for them. Whoever want to practice, I think India में तो अभी मुझे नहीं लगता कि उतना स्पेशलिटी थेरेपी प्रोग्राम्स अवेलेबल है. बट
like somebody, for example, wants to learn about trauma focused therapy. It's a very trending therapy right now, trauma focused therapy. So just search it upon LinkedIn ki who all are pioneers working in those fields, and if possible learn from those pioneers. So right now I went into, there was this Asian CBT conference on trauma right now in AIMS Delhi. So there was this one person जिन्होंने ओसीडी में बहुत काम किया है, बहुत काम, एज इन लाइक ही इज वन ऑफ द पायनियर जिनके मॉडल हम पढ़ते हैं, जिनके मॉडल हमें बुक में दिए हैं. सो व्हेन ही केम एंड टॉट, people understood the difference जो सिर्फ बुक से पढ़ के पढ़ाते हैं and somebody who is actively doing something in their field. So if you ever get a chance to learn from people who have formulated a field या फिर who have done extensive research in a field, their hands on learning experience, learning from them or like what they are doing, that will be like magnificent, that will be like something else. Book से पढ़ के देखो सब कर सकते हैं, book से not everybody can become a pioneer, but their experiences, their way of doing cases, their way of explanation, that will change because they understand what were the challenges they went through when they were devising a theory or when they were devising a model. या फिर ऐसे ऐसे cases आते हैं. So if possible, there are a lot of online courses available nowadays, but like read up or study up from the authorized institute only. ऐसा somebody who just supposedly जो बस ऐसे अपना marketing कर रहा है, जिनका कोई ऐसा accreditation नहीं है, जिनका like who have just done some 1 year or two diploma course or certificate courses, and I'll never recommend learning from them. Yeah. So, like, are there any journals or like articles which you would suggest, like, we should follow religiously, or do you follow religiously something? No, no, I don't follow anything as a religiously. Dissertation ke time when I needed, then I started looking upon journals and articles. So I mean, see, even journals are specialized in something. Now there is this journal of ISCP. Unka, they have their own journal. So unka journal is more about clinical cases only. So it will depend कि आप कौन से area में interested हो काम करने के लिए. See, there is the information available is so vast that even if today we stop producing information, that information is too much to happen. You have to sort what information you want to take in. Now, if you want to like work upon autism, so there will become related articles. आपको जिस जर्नल में वो छपते हैं उस जर्नल का आप देख लो कि इंडेक्स फैक्टर कितना है, या फिर एच फैक्टर जो भी उन लोग, impact factor, index factor बोले, impact factor कितना है, that will give you an idea. But more than that, Muskan, what how a journal is, how good an impact factor is, that particular research article, is it that being helpful for your research or your interest area, that matters more. Sometimes ऐसा होता है कि लाइक द बिग जर्नल्स या फिर जो बहुत ही ऐसे established esteemed journals होते हैं, they break put out articles in a very difficult language for for us, even for us to understand, क्योंकि उनका इतना ऐसा high use statistics and everything. So क्या फायदा है मेरा if I can't understand what they're trying to tell me? I'll rather search and see an article जो मेरे को समझा पा रहा है कि what they have done as a research, what they have brought in, what they have contributed to society. So it is not just about like following a journal, whether that journal, whether that article is making sense to you, is making you help learn new thing, that will matter. So say like there is this Google Scholar या PubMed वगैरह पे, there are tons and tons of articles available. खोलो देखो समझ आ रहा है तो फिर उस जर्नल के और आर्टिकल्स पढ़ लो. नहीं समझ आ रहा है, ऐसा मत सोचो कि ओ दिस इज समथिंग बियॉन्ड माय लेवल, आई डोंट इवन स्टैंड हियर, मैं कहाँ हूँ. नहीं, देयर इज दिस ह्यूमन नेचर इज अबाउट बीइंग शो ऑफ. हम जितना ऐसा हाई इस लैंग्वेज यूज कर ले एंड दिस बिग स्टैटिस्टिक्स, एवरीबॉडी थिंक्स ओ माय गॉड दे आर सच बिग ग्रेट पीपल. नो, द there is this thing ना, there is this one principle in psychology जो हम पढ़ते भी हैं, I don't know which actually says that the in the easiest and simplest way you can explain something, that is how it
And that is what tells ki how good you are at your work. ऐसे बड़े बड़े words use करके anybody do. If you can explain it to the layman कि हाँ this is what is going on, that is what makes you appear कि हाँ okay you're doing something good. So yeah, I feel that. I totally agree with you on this point. Like we can all read Google's definitions and tell it to everyone, but Yeah, yeah, if we are yeah, not able to make that understand to someone who is not from our field, yeah, then why not? yeah. But what's the point? So, like next question, for my next question is like the demand of clinical psychologists, and since it's increasing in the recent time, so like what are the career paths available apart from the conventional, which is the hospital setting where we practice? What is the more scope of private practice or in research institutions? How do clinical psychologists stand there? Right now the market is growing a lot. There's a like a lot of demand in the private sector. Private sector means there are a lot of startup organizations, mental health organizations, specifically mental health organizations, जहाँ पे they are hiring clinical psychologists and everything. So the market demand, I think it's great right now, at least currently. uh, if you want to go into research, I think research is mostly associated with going into universities only. क्योंकि the new startup organizations, they are not research oriented, they are more about practicing and practicing only. So जो सिर्फ practice करना चाहता है, they can go. If somebody wants to delve into area of both practice and research, I would suggest going into institutes like निम्हांसी IP Rinpas, जहाँ पे भी research करना available हो, so that आपको दोनों मिलता रहेगा. और इसके अलावा right now they've started actively recruiting clinical psychologists in like DRDO, the one I think DRDO वगैरह में भी, like some very esteemed institutes. I do not know about the pay much क्योंकि अभी मैंने देखा नहीं है, but I think if it's DRDO I'm assuming कि अच्छा होगा. So I think they have also started recruiting. So when it comes to job की कमी नहीं है, पर ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि हर किसी को मिल जाएगा. यू हैव टू एक्टिवली सर्च, यू हैव टू एक्टिवली सीक इट. ट्राई व्हेनेवर, जब आप एमसाई कर रहे होते हो एंड व्हेन यू आर अबाउट टू फिनिश, स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज बिफोर यू एंड योर कोर्स, so that you मतलब यू स्टार्ट लाइक प्रैक्टिसिंग. आप बाद में सोच लो आपको क्या करना है. इफ यू वांट टू गो अहेड विद PhD एंड एवरीथिंग, गो अहेड. बट अगर आपको थोड़ा सा भी, लाइक इवन 6 months यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सो देखो जब आप ट्रेनिंग में होते हो आपके पास ट्रायल एंड एरर करने का बहुत स्कोप होता है. आपके प्रोफेसर्स आपको बचा लेंगे. हमारे यहाँ बहुत होता था, ट्रायल एंड एरर कर रहे होते तो हमारे प्रोफेसर्स बचा लेते थे जब पेशेंट गाली दे रहा होता. तो आपको रियल डील क्या है तभी समझ आएगा जब पेशेंट्स आता है, व्हेन आप पेइंग यू मनी, एंड देयर यू कांट गो मच इनटू ट्रायल एंड एरर. देख थोड़ा इधर उधर मिस्टेक सबसे होती हैं, everybody make, nobody is like being perfect, but there you orient your skills more. There you in like inductive reasoning एक तरह से, like you induce all it. Now you have to work in a structure, now you have to work like this. So there is where you start understanding, okay, this is how I'm going to see my patient, this is the type of therapy I'm interested in, this is the type of disorder. So if I mean, like, I'll suggest कि as soon as you finish your MPhil का degree, अगर आपके पास time period है between your MPhil being over and आपके PhD exams के लिए, so so do go into an organization and work. Abhi, so a lot of organizations are you doing remote and part time. Like I'm also doing a remote job only, and a lot of organization take part time also. कि अगर आप full time नहीं अपना देना चाहते हो, but work can take experience. और बाकी research में तो आपको interest. Okay, now if somebody who is like कि नहीं मेरे को इतना practice नहीं करना है, I'm very much research oriented, but समझो admission नहीं हुआ उनका किसी reason से या उनको नहीं मिला, work as research associate. बहुत सारे projects आते हैं. एम्स, मतलब ये सारे जो जितने भी बड़े मेडिकल कॉलेज, एम्स, PGI, KGMU, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं.
apply for this project, 1 year का contractual period होता है most of the projects, like from 6 months to 1 year. So even if you are thinking कि अभी मैं क्या करूँ, what करूँ, work as research associates, आपके CV को ये बहुत help करेगा जब आप जाओगे जॉब लेने. तो ऑल ऑफ देम वांट कि एटलीस्ट आपके पास रिसर्च की ना स्किल्स हो, भले ही आपका ऑर्गेनाइजेशन अभी रिसर्च करा नहीं रहा है, अगर इफ इट इज अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, बट लाइक देयर आर सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जो अभी काफी मार्केट में लाइक दे हैव took their stand, so they're slowly going to research, so that will give you an advantage. Okay, also if now imagine concept, they have not seen that era of digital technology of like FOMO effect and screen time and everything. So उनके लिए थोड़ा difficult है ये समझना. So that is what I feel कि ये जो middle generation psychologist होते हैं वो ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं उधर को भी और इधर को भी. So I think we have more scope to learn, grow and earn. Very much so. Yeah. So, lastly, my question is like, how do you think the education and training of clinical psychologists in India need to evolve so to meet the changing needs of society, as well as is any advice which you would like to give to the aspiring clinical psychologists? I wish there are more faculty available so that more supervision can be given, because even though when we are in training and like there is the scope of trial and error, there is a real person being affected. My trial and error can impact them negatively sometimes, because we are also very new in this field. New to choda, we are just trainees. So every time I won't be able to understand the issues they are going through, and that is where the supervision needs to come in. So I think the only lacking which I feel currently is the need for supervision, need for like some really good supervision. And uh, right now the professors like in सारे institutes में इस वक्त जो professors हैं, they are very much oriented with the traditional therapies only. So if if possible, if more young professors could be recruited in, so that they'll understand the changing challenges, like whatever topics are changing. Also they sometimes, when people who like young professors come in, they can, what I'm saying right now, like this young generation of clinical psychologists can make a bridge between teens and the older adults. So same way they can also help see things from a more fresh perspective. So supervision lacking is significantly present right now. If that could improve. Also, advice. So yeah, advice is just you'll fall every day when you are going into MSci and MPhil. Every day you'll question yourself whether I chose the right field, whether I'm right fit for this position or not, whether I should be a clinical psychologist or not. See, if you are questioning, if you are having these questions for yourself, I feel you're going on the right path because you're introspecting yourself. The more you're introspect yourself, you जो हम empathy बोलते हैं, हम unconditional positive regard और ये सब जो आना चाहिए वो थियोरी में लिख के नहीं आता है. वो आता है when you go through life, when you see different things, when you accept कि okay, my perspective is also correct, the other person perspective is also correct. We just are not on the same page right now. So that is, I think, all the advice I have. The more you learn about yourself, the more you are able to fix word use nahi karna chahiye. The more you are able to grow out yourself, it will become very easy in this field of psychotherapy. Books can help you, they'll definitely give a facilitation, but वो हम कहते हैं ना, why do we call up experienced people to give talks or seminars? Because they have learned through their life, they have all seen those practical cases and they know the practical implications that come in dealing with patients or therapy and everything. तो उनको वो बुक का ज्ञान नहीं देना होता है, they'll tell you what real things are happening around. Same goes with therapy also. जब आप अपने अंदर मॉडिफिकेशंस करते हो, जब आप उन थेरेपी टेक्निक्स को अपने ऊपर लगाते हो, देन यू अंडरस्टैंड कि जब पेशेंट रेजिस्टेंट होता है या पेशेंट होमवर्क करके नहीं आ रहा होता है कि क्यों नहीं किया.
तो आप गुस्सा नहीं होगे, you'll understand. Okay, how can I help them out? Yeah, that is my advice. Thank you so much. It feels so good to hear this, and it's such a relief because every day in this journey, when like I am also preparing for ample entrances, the same question goes through every day. Like, am I a good fit for being a clinical psychologist? Will I be like able to do justice to the field or not? But yeah, it It really happens, it helps. will happen. So that is all from my side. Like now, the stage is open. If anyone has any questions, you can turn on There are your a lot of them have put in mics. your chat box. You can either turn on your mics or to ask the questions, or you can type in the chat box. I think we have got a few questions in the chat box. So should I read it out for you, or you Yeah, can? I'll read it. I'll answer. Which book, ma'am? I'm facing network issues. Okay, I'll type in the books once, so you can take it from Muskan. Yeah, I'll share Ravi in sir the. has, I think, already written. Fish Clinical Psychopathology that we read in MPhil only. That's a great book. That's a really good book about psychopathology. But वो if you want to, if you're interested, you can read. Otherwise, MPhil में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा. Ma'am, I'm interested in pursuing a career in clinical psychology. What are the recommendations, steps, or paths to take after completing my 3 year BA in psychology? BA करने के बाद आपको मास्टर्स करना होगा. अभी करंट प्लान में आपको 2 साल का भी मास्टर्स करना ही पड़ेगा बिकॉज आपने 3 साल की डिग्री ले रखी है. 2 साल का मास्टर्स इन साइकोलॉजी एंड उसके बाद इफ यू वांट टू गो इनटू क्लिनिकल साइकोलॉजी तब आपको एमसाई करना होगा या एमफिल. अभी तब आई से एमफिल ओनली जब एमसाई इम्प्लीमेंट हो जाएगा. लाइक यू हैव स्टिल 4 years more of study to become a clinical psychologist. I am in my bachelor's and I'm thinking of doing MSc psychology after this. Can you tell me the pros and cons of doing MSc after BA psychology? There are no cons of it. There's no big difference between doing MA और MSc. सब एक ही बराबर है. वो बस MSc इसलिए बोलते हैं because mass. Also, since you are in BA, BHU will give you if you are doing from BHU will give you a degree of MA only. It won't give you a degree of MSc. And I think there are I only think just 2 or 3 institute. Huh, huh. I think like most of the colleges which offer MSc, they look for like BSc is the criteria. Like for most of Uh, the colleges, I think. Also, MSc, I as far as I know, the specialty in Masters in Clinical Psychology is present in TIS, Christ, but Christ. they also have this MA in Clinical Psychology. I Hmm. don't think they have MSc. Maybe I'm wrong. You can check it up. But it won't make any difference. Frankly, telling you, आप MA करो, आप MSc करो, clinical psychology पढ़ना, that is the important part. There are no cons of doing MSc after BA. अगर आपको मिल जाता है तो. For getting the idea of orders, which should we prefer, DSM और ICD दोनों. प्रैक्टिस में जब आप एमसाई करोगे तो हम आईसीडी को यूज करते हैं फॉर गिविंग आउट द कोड्स एंड एवरीथिंग. सी डीएसएम इज मोर थ्योरी ओरिएंटेड. थ्योरी ओरिएंटेड इज लाइक डीएसएम ने काफी वास्ट तरीके से और बहुत एक्सप्लेन्ड मैनर में डिसऑर्डर्स को डिस्क्राइब कर रखा है. लाइक उनका पूरा इटियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी एंड एवरीथिंग. आईसीडी इज काइंड ऑफ अ डायग्नोस्टिक बुक. बस आपने एक कोड देखा, मतलब समझो आपको किसी को डिप्रेशन का वो देना है तो आपने कोड देखा कि F30 होता है, डिप्रेशन होता है, आपने दे दिया. तो दैट इज व्हाई आईसीडी यूज. अगर आपको पढ़ना है, यूज डीएसएम. आईसीडी तो आपको यूज करना ही पड़ेगा आप इंडिया में हो तो. And I think no, I think in Mumbai side DSM is more used as far as I know. महाराष्ट्र and उस तरफ डीएसएम यूज होता है वरना मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया यूजेस आईसीडी फॉर डायग्नोसिंग. I'm interested in pursuing a career in clinical psychology. What are the recommendations, steps, or path to take? Well, that I told now you have to do abhi BA के बाद MA and then MSci. Since the current final year MA psychology students will have only one attempt for MPhil in psychology. So what other options they have, and meanwhile what they can do? Also doing a diploma course from which institution will be good. Also a bit of detail of career in clinical psychology and how child psychology. Apart from this, if you want to do something in the field of positive and health psychology, okay, one by one. Why will have just one attempt? Abhi to like all of the institutes currently they take their separate exams. So if I'm assuming an average of 20 to 25 institutes are present in India, Shivangi, तो आप बहुत सारे options है आपके पास MPhil के exam देने के. There is no unified exam as of yet.
तो यूल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एमफिल में देने का। हाँ, अगर आप ये पूछ रहे हो कि एमफिल चेंज होके एमसाई बन जाएगा, दैट इज नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। द बोथ ऑफ द डिग्रीज आर सेम, सिर्फ उनका नाम बदला है, तो सिलेबस सेम रहेगा। Also, doing a diploma course from which institution will be a good idea? See, one thing you need to understand, अगर आप सिर्फ 1 year का डिप्लोमा कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, you get the license of an associate clinical psychologist, meaning you can only practice, you cannot teach ever. टीचिंग सिर्फ वही कर सकते हैं जिन्होंने एमफिल 2 साल का एमफिल पूरा किया हो। ऑल्सो जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया होता है, आई थिंक दे आर, वो कुछ सर्टेन स्पेसिफिक काइंड ऑफ केसेस ही देख सकते हैं। कहाँ से होता है, आई थिंक यार मेरे को APCP, नाम I think नहीं आता रहा है। Amity office, PDCP. एमिट में होता है, देयर इज दिस यूनिवर्सिटी, एसजीटी में होता है 1 साल का। I think JNU also offers 1 year. I'm not very sure. I'm not very sure actually about professional this 1 year diploma. I'm sorry. आप आरसीआई की वेबसाइट पे देख सकते हो। आरसीआई की वेबसाइट पे जाना, वहां पे आपको आ जाएंगे कि हर कोर्स के लिए क्या क्या इंस्टीट्यूट है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए डालना तो दे कम अप की पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कौन कौन से इंस्टीट्यूट देते हैं, एमफिल कौन कौन से इंस्टीट्यूट दे सकते हैं। हाँ, ये चीज याद रखना, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज डू योर एमफिल और एमसाई फ्रॉम एन आरसीआई licensed institute only. There are a lot of institutes right now in India जिनके पास आरसीआई का रजिस्ट्रेशन नहीं है, लाइसेंस नहीं है। आपका पढ़ना वेस्ट हो जाएगा वहां से, I'm telling you. और हर साल लाइसेंस 5 या 6 साल पे रिन्यू होता है, सो मेक श्योर, राइट, कि आप आरसीआई रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से। Bit of a detail in child psychology and how we can practically pursue it. uh MPhil करने के बाद if you are feeling कि you want to work with children specifically, currently ऐसा कोई established डिग्री नहीं है जो आपको स्पेसिफिकेशन दे दे कि नहीं आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो। नहीं, आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो, यू वांट टू वर्क विद किड्स, तो आप लिख सकते हो, पर ऐसा कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के लिए कोई ऐसा डिग्री असाइंड अभी है नहीं। तो देयर इज दिस वन इंस्टीट्यूट निप्सेड। निप्सेड 1 साल का डिप्लोमा देता है इन चाइल्ड एंड विमेन, आई थिंक चाइल्ड एडोलसेंट एंड विमेन स्टडीज में कुछ, वो 1 साल का होता है। तो ओनली आई थिंक दे निप्सेड ओनली गिव्स यू दिस चाइल्ड साइकोलॉजी में डिग्री, अदरवाइज कोई ऐसा इंस्टीट्यूट में मेरे जानकारी में नहीं है जो आपको चाइल्ड साइकोलॉजी में ऐसा कोई डिग्री दे। आप, और ऐसा जरूरत नहीं है। हाँ, देर इज एक्चुअली वेरी मच नीड ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ज्यादा है नहीं। अगर आप करना चाहते हो तो पैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, देयर इज नथिंग टू बी ऐसा। Apart from this, if we want to do something in field of positive and health psychology, then what we can do? I'm sorry, but I'm not very much aware about positive and health psychology, कि वो उनके professions क्या होते हैं। Health psychologist, I don't know, I've not even heard about people like they work in the field of health psychology, but ऐसा health psychologist का ऐसा कोई designation मिलता है? हेल्थ साइकोलॉजी वहां से होता है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी से Hyderabad होता है। University. हैदराबाद यूनिवर्सिटी से होता है हेल्थ साइकोलॉजी। तो अगर आपको पढ़ना है उसमें, आई थिंक यू आर ऑलरेडी इन योर मास्टर्स, राइट? हाँ, तो वो दे आल्सो गिव मास्टर्स ओनली, बट इफ यू स्टिल वांट टू गो अहेड, मे बी यू कैन स्टडी इट फ्रॉम हैदराबाद। उनका कोर्स काफी अच्छा है, व्हाट आई हैव हर्ड अबाउट इट, बट आई एम नॉट वेरी मच good with this area का knowledge, so I can't say much. In movies, we often see characters with mental health problems going to psychiatrists rather than psychologists. And what factor influence real life preference? If you have seen more of Hollywood movies, yeah, even some Bollywood movies, see, basic difference between psychiatrists and psychologists is psychiatrists are those जिन्होंने MBBS और MD किया हुआ है. So, ideally, a psychiatrist can do both. वो medicine से prescribe कर सकते हैं and वो therapy भी ले सकते हैं. तो दिखाते हैं ऐसा इसलिए है because most of the mental, I mean like people who come to mental hospitals, they do require medicines. तो इसलिए ऐसा मूवी में दिखाते हैं कि हाँ वो मेडिसिन भी दे रहे हैं और वो थेरेपी भी दे रहे हैं। साइकाइट्रिस्ट इज अ मोर नॉन डेजिग्नेशन, क्योंकि वो बहुत पहले से चला आ रहा है। राइट नाउ तो अभी लोग यही डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि एक साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है, या फिर
राइट नाउ देयर इज दिस डिबेट अपॉन कि नहीं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अलग होते हैं, साइकोथेरेपिस्ट अलग होते हैं। तो ये नॉर्मल क्लेचर इंडिया में भी उतना वर्क कर नहीं रहा है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सिर्फ थेरेपी दे सकते हैं, दे कांट प्रिस्क्राइब मेडिसिन, इसलिए मूवीज में ऐसा दिखाता है। ऑल्सो if you are seeing Hollywood ka movies, yeah, if you see in foreign, their psychiatrists can, their even psychologists can give medicines. So there's this course of, I think, Declan Psy from UK. Wow, that's a very extensive course, 6 7 years ka. So waha they are licensed. The psychologists are also licensed to give medicines. India mein nahi hai. India mein there's this very clear distinction. So yeah, that's all. I think Nandini has a question. You can unmute yourself and ask Nandini. Hello, good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, like you already made a very clear distinction on the importance of reading DSM or ICD, like which one should we read and when. Like my question is, I am currently in my final semesters of bachelor's. Okay, so keeping one situation in mind, like I am not going to get any in-person help if I'll face any difficulty in reading any one of that books. The only help that I could get will be from like social platforms like YouTube and all. Now, which book Yeah, should I refer to? DSM. All right. Thank you, ma'am. One more question is Mm-hmm. like I'm seeing many people doing their internships from their second year of bachelor's or even third year of bachelor's themselves. Like sometimes this makes me quite disappointed na, ki, I'm not able to find an internship like particular in that clinical that is relevant to clinical field. Otherwise we can get many internship like on social media platforms or content writers. So like is Mm-hmm. this really a matter to be concerned, or I am just overhyping that I am not getting any relevant field to work in? Bachelor's में if you're not getting internship, no, it's not a matter of concern. Bachelor's में तो एक तो first of all, if you go into mental health institute, I'm specifically talking, they do not prefer taking bachelor's का students because right now you do not have clinical knowledge, very basic knowledge you have. They rather prefer masters के student. Also, even if you're not getting internship right now, it is okay. Where are you? In which city you are in, Nandini? I'm in Varanasi. So if even if you are like you really want to do an internship, there is this institute, Deva Mental Health Institute, Durga Kund के आगे है. Durga Kund के आगे है. I did my internship from there. So they are specifically like this mental health institute. उस time वहाँ के psychiatrists बहुत अच्छे थे, and they even had a psychologist also. So if you really want to go, you can go ahead and learn. But right now you're just in second year. Learn. Right now, live your college life यार. ऐसा कोई भागा नहीं जा रहा है. There is like Although internship करने I'm के in बाद. third year. As a third year. हाँ, so if we are in your third year and like when you're अभी तो आपका 6 semester चल रहा होगा ना, you're about to finish your third year. हाँ. हाँ, so then after you can start looking into your internship. You want to, if it's okay, even if you don't get, that is not going to make a much of a difference. But after masters, I definitely recommend please do an internship before entering into a mental health hospital. Bachelor's, like, it is right now there's nothing, not much of a need. It's just out of interest. If you want to go and do it. All right, ma'am. A last question from my side, if you don't mind. Yeah, yeah, sure, it's okay. Okay, keeping a student who is really passionate about pursuing clinical field, can you please make us point down some really important topics, whether it be like in academics, like any important concept or any book or quality that is expected out of us to know entering in masters, so that we can prepare ourselves with those concepts कि ये तो आना ही चाहिए इस बच्चे को अगर ये बैचलर्स करके आ रहा है तो ऐसी कोई चीज़ जो हमसे एक्सपेक्ट की जा रही हो. क्लिनिकल फील्ड में आपको एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा. जनरल साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स आपसे एक्सपेक्ट किए जाएंगे कि आपको आने चाहिए. तो जनरल साइकोलॉजी की जो बुक्स है उनके साथ देखो बहुत एक्सपेक्टेशंस पता नहीं बाकी इंस्टीट्यूट्स में होती है क्योंकि बीएचयू के प्रोफेसर्स को तो नहीं होती है यार. हमसे तो नहीं थी. तुम हमें कुछ नहीं बोलते थे. बट स्टिल जनरल साइकोलॉजी की बुक्स आर मोर रेलेवेंट टू स्टडी. स्पेसिफिक क्लिनिकल तो वो तो मास्टर्स में शुरू ही होगा जब आप
specifically clinical कोई पढ़ोगे तो I think yeah, general psychology, yeah, and research. If these professors are interested in one thing, they're interested in your research ka knowledge and statistics ka knowledge, because all of them are very much into doing research and that. So research or stats ki agar aap book पढ़ सको, so I think there is like uh, AK Singh, Kothari, Spiegel बोल रही हूँ, what is its name? I don't know, I forgot. S से उसका नाम है, अभी मेरे को याद था. So Yes, Mangal. general psychology and research. हाँ, एस के मंगल एंड एवरीथिंग, ये पढ़ लो. दैट इज मोर देन इनफ फॉर द प्रोफेसर्स टू बी हैप्पी कि आपको इतना आता है. All right, ma'am. Thank you so much. ऑल्सो आई थिंक बैचलर्स में बीएचयू ने तो बंद कर दिया ना डेजर्टेशन करवाना, मास्टर्स में होता है. Yeah. सो इफ यू आर प्लानिंग, नंदिनी और एनीबडी एल्स, कि वो uh, अपना पूरा पढ़ाई लिखाई सब बीएचयू से करना चाहते हैं, प्लीज डू अ डेजर्टेशन इन मास्टर्स. इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. Also, not just in masters, even in MPhil, people who did dissertation already and came, उनको बहुत कम डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी थी, rather than people like me जिन्होंने डेजर्टेशन नहीं किया था, जिन्होंने कोई आइडिया नहीं था कि कैसे होता है रिसर्च या स्टैटिस्टिक. हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ा था. तो इफ पॉसिबल, because the BHU professors, again I'll say, are very good with research and statistics, so please do a dissertation in masters. Any other questions? If you have, you can ask. I think that is all for today. If no one has any other question, I think we can end this session here. Thank you so much, ma'am, for taking out the time and being here today. It was a really informative session for all of us who wish to pursue clinical psychology. So I myself have been, as I said, preparing for MPhil entrances, and this has been really helpful for me, and I'm sure it will help others as well. So thank you so much for joining the podcast, and for You others, you are can. very much welcome, because I'm frankly speaking, I'm feeling so as a like on cloud nine. Oh, I'm being called as a speaker because I've passed out that institute, so that coming back as an alumni and like giving all this whatever information, it feels so honored and so blissful. I can tell you. No, it's obviously like there are many seniors, and I think I have been very found really nice seniors when I came to BHU, and it has been really helpful. Like all of the Yeah. alumni from BHU, जिसके साथ भी I have connected so far, like they have been incredibly helpful and so down to earth and humble to share their experiences and information with us. And this is what we had started when we started BHU PsyConnect. That was the aim here, to bridge that gap between the seniors and the Mm, juniors, and I think that is helping so far. yeah. Yep. So everyone, you can subscribe to our YouTube channel to watch the recording of this session as well as other old and new sessions. The link is present in the chat box. Thank you all for joining today. We can end the session here. Yeah, thank you so much again. And if anybody wants to have any clarification of the information, uh, on the YouTube channel, when the video gets uploaded, you can put in the chat box. I'll address the issue there only. Yeah, sure. We can share your LinkedIn ID as well if that's okay. We can connect with you Definitely. there. Yeah. Okay. Thank you so much. Okay. Bye, everyone. Take care.